Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss about one another very important topic and that is human air. ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो बाहर से कान नज़र आता है वो तो सिर्फ एक पिन्ना इसका बोलते हैं, बाहर की शक्ल नज़र आती है। अब आया बस यही कान है या इसके अंदर बहुत कुछ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो नजर आता है दैट इज ओनली कॉल्ड एज एक्सटर्नल एयर। जो हमें नजर आता है ये चीज नजर आती है एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एयर। हाँ, इसके बाद एक और इसका हिस्सा है यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड एज मिडल एयर। और उसके बाद जहां मेन काम होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एयर। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन हिस्से तो आपने देख लिए, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इंटरनल एयर। लेकिन वंस अगेन गोइंग टुवर्ड्स वन ऑफ अ ब्यूटीफुल वीडियो ऑन यूट्यूब इन ऑर्डर टू मेक यू लर्न, अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। सो लेट्स गो टुवर्ड्स YouTube. 3 sections of the ear work together to make this happen. They are the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear is made up of the pinna and the ear canal. These parts gather sounds from the environment and funnel them into the middle ear. The middle ear takes these sounds and turns them into vibrations. Sounds that come into the middle ear hit the eardrum, causing it to move. The eustachian tube helps the eardrum to work well by keeping the air pressure balanced on both sides. When the eardrum moves, it makes 3 small bones called ossicles vibrate. The vibrations are then sent to the inner ear. The inner ear receives vibrations and changes them into messages that go to the brain. These messages are called nerve signals. The inner ear is made up of the cochlea and the vestibule, which includes the semicircular canals. The cochlea has fluid in it that moves like a wave. This happens when vibrations come in from the middle ear. The moving fluid causes hair cells to make nerve signals about sound. Semicircular canals also use moving fluid to create nerve signals that help with balance. Then, the signals from the cochlea travel along the auditory nerve. Signals from the semicircular canals go along the vestibular nerve. These 2 nerves come together and lead to the brain. There, the brain decodes the signals to get information about sound and balance. Dear students, did you see the functions of human ear? Look, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आवाज आती है और ये एयर कैनाल से होता हुआ सीधा जाके दिस इज आउटर एयर से अंदर आ जाता है एंड दिस इज एयर ड्रम। एंड यू सॉ इन दैट वीडियो जब इसके ऊपर साउंड लग रही थी तो यहाँ वाइब्रेशन पैदा हो रहा था। सो दिस इज द वर्क ऑफ द मिडल एयर। मिडल एयर से मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक वाइब्रेशन पैदा होती है और वो सीधा जाके कॉक्लिया, दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, यहां पे दिस टर्न इनटू मैसेजेस। यहां से तो सिर्फ आवाज होती है, उसको वाइब्रेशन में इसको एयर ड्रम चूंकि बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत छोटी सी आवाज भी आती है तो इसके ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और ये सीधा कॉक्लिया में आता है और यहां जो आवाज है इसकी रिकॉग्निशन होती है और वो मैसेजेस में आ जाते हैं और ऑडिटरी कैनाल के थ्रू सीधा जाके ये कहां पहुंचता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रेन में। आप जब कमरे के अंदर बैठे हैं और बाहर से आवाज आती है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको कहां पता चलता है कि दिस इज योर मॉम और दिस इज योर डैड और दिस इज योर ब्रदर और दिस इज द वॉइस ऑफ योर सिस्टर। आपको कैसे पता चलता है? Because all these 4 sound come to this way and all they touch the eardrum and enters into the ossicle bones और आगे जाके कॉक्लिया में यहां से उससे मैसेजेस बनते हैं और ये ब्रेन पहुंचता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, this was an interesting one. Let's see one another interesting information. The auditory canal of internal ear concern with the balance of the body. It tells us about actual position of your body. So look at this one more. Internal ear
द केनाल ऑफ इंटरनल एयर कंसर्न विद ये जो आपको केनाल है मेरे प्यारे बच्चों, इससे अगर आपकी बैलेंस का भी पता चलता है, थोड़ी सी मूवमेंट इसको फील होती है और हम फिर संभल जाते हैं। अगर कहीं पे अल्लाह ना करे हम गिर रहे होते हैं तो वो भी दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। So my dear students, once again I'll be telling you the same, whatever you have done it, सीधा जाके समर पैक खोलो और समर पैक में इसकी एक्टिविटीज पूरे करो। Well done, excellent, शाबाश my students, I am sure and I am quite hopeful that you will be doing better. Allah Hafiz.